Okay, let's have a look at this. In how many ways can all 9 letters of the word telephone can be arranged in a line if the letters P and L must be at the ends? Okay, P and L have to be at the ends. 9 letters हैं आपके. So how can we arrange them? Let's look at this. Okay, so P and L have to be at the ends. How many P's do we have? Only one P. How many L's do we have? Only one L. Ends के ऊपर P और L आ रहे होंगे, right? कितने पॉसिबल केसेस हो गए इसके? कितने पॉसिबल केसेस हो गए इसके? 2 हो गए सर. 2 हो गए, right? या तो ये P L होएगा या L P होगा, right? So these are the 2 possible cases that we've got. अच्छा, so हमने P और L को place कर दिया. What are we left with? We're left with the 7 letters in the middle. 7 letters आपके पास बाकी places में रह गए. Do we have any repetitions? E is coming 3 times. There are 3 E's. T सिर्फ एक दफा है. L हमने place कर दिया already. H O N. Yeah, so no other letter is repeated. So बाकी letters हमारे पास रह गए, उनको उनकी arrangements कितनी हो जाएंगी? बाकी तो letters कितनी हो जाएंगी? 7 फैक्टोरियल over 3 फैक्टोरियल नहीं होगा सर? Yeah, so 7 factorial over 3 factorial. Right? So 2 times 7 factorial over 3 factorial. That's your number of arrangements for this. ठीक है? ये क्लियर है सबको? जी सर. अरेंजमेंट्स की बात हो रही है तो या तो आप फैक्टोरियल्स यूज कर रहे हो या फिर आप परम्यूटेशंस यूज कर रहे हो, राइट? फैक्टोरियल भी परम्यूटेशंस ही होता है बेसिकली. 7 फैक्टोरियल इज द सेम थिंग एज सेइंग 7p7, राइट? हमने डिस्कस किया था. ये परम्यूटेशंस को ही आप डायरेक्टली अगर लिखते हो फैक्टोरियल्स के टर्म्स में आप लिखते हो. अरेंजमेंट्स जब भी आ रहे हैं तो परम्यूटेशंस की बात हो रही है. अच्छा, अब आप कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस. सिलेक्शन का मतलब है वी टॉकिंग अबाउट चूजिंग स्टफ. कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है. तो नाउ द ऑर्डर डज नॉट मैटर. सिलेक्शन का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता. Now, how many different selections of 4 letters can be made from the 9 letters of the word telephone if there are no E's? E's नहीं होने चाहिए. अच्छा, E's को अगर निकाल दें तो बाकी सारे तो हमारे पास डिफरेंट लेटर्स हैं ना. बाकी सारे हमारे पास डिफरेंट लेटर्स हैं. तो इसमें क्या होगा? सिंपली कितने लेटर्स रहेंगे बाकी? 6 letters. 6 में से आपको क्या करना है? 4 चूज करने हैं. That's just like 6C4. So that's how much? 6C3 was 20. 6C4 I can see 15 होता है ना. 15 है सर जी. Okay, so that's 6C4. ठीक है. So that was only 1 mark because of this reason. क्योंकि वहां पे आपको पता था कि वो आपने एक्सक्लूड कर दिया, ईज एक्सक्लूड कर दिया, रेपिटेशन वाले केसेस तो एक्सक्लूड हो गए. अच्छा, नाउ इट सेज exactly 1E. exactly 1E. आप क्या करें? 4 लेटर्स आपने चूज करने हैं, है ना. एक ई आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया. 1E is already selected. और तो ई नहीं हो सकता उसके अलावा. 3 ईज में से एक ही आपने सेलेक्ट कर लिया. हाउ मेनी लेटर्स आर वी लेफ्ट विद? हाउ मेनी लेटर्स आर वी लेफ्ट विद? ई के अलावा बाकी कितने लेटर्स हैं आपके पास? टोटल 9 थे ना. 9 में से जी सर, 8 निकाल दिए. नहीं, ई तो तो और तीनों नहीं आ फिर सकता ना. ई ठीक है. और नहीं आ सकता ना. एक तो आपने ई सेलेक्ट कर लिया, दूसरे ई के अलावा और कोई नहीं आ सकता. देयर आर 6 लेटर्स लेफ्ट, राइट? जिनमें से आप और सेलेक्ट कर सकते हो. तो बाकी 6 लेटर्स में आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? बाकी 6 3. लेटर्स में कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 सेलेक्ट करने हैं बिकॉज़ एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया. You have 6C3 now, which is 20. So you got 20 ways for this.
Is that okay? सर यानी कि Get it? उसने एक लेटर हमारे लिए चूज कर लिया है, हम उसे Yes, वो निकाल एक देंगे। चूज कर लिया। Yes, उसको निकाल दिया ना, तो उसने exactly 1 E। Exactly 1 E का मतलब जो 3 E's थे उसमें से एक तो उसने E सेलेक्ट कर लिया पहले, तो that's already fixed now। अब वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी 3 आपके पास और सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 3 आपने कितने लोगों में से सेलेक्ट करने हैं? 6 में से, 6 लेटर्स में से 6 में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, that's 6C3। ठीक है सर। Okay, so now we've got the fourth part. It says given that there are no restrictions, and that's tricky, that's 4 marks as well। अब यानी कि पहले देखें मसला हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने चूज करना है और हमारे पास कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। हमने कहा था कॉम्बिनेशंस जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकता रेपिटेशंस को डायरेक्टली, तो हमें वो खुद से हैंडल करना पड़ता है। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में क्या फायदा था या क्या चीज आसान थी, उसने जो ईज थे ना वो खुद हैंडल कर दी। उसने कहा कोई नहीं, ईज नहीं डालने आपने, तो रेपिटेशन वाला केस तो खत्म हो गया, आपने 6 में से 4 चूज कर लिया। सेकंड केस में भी उसने कहा अच्छा ई आपने सिर्फ एक डालना है, यू डोंट वांट मोर ईज देन 1, तो आपने एक ही सेलेक्ट कर लिया, बाकी आपने केसेस निकाल लिए। अब वो कहते हैं देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, अब कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू डू नाउ, अब क्या करें? सर हम 3 केसेस में डालेंगे सर, एक जिसमें हम चूज करेंगे वर्ड उसमें एक ही हो, जिसमें 2 हो फिर 3 हो। एग्जैक्टली, सो देखें 2 उसने पहले से निकलवा ली हमारे से केसेस। उसने कहा we have the number of ways when there are no e's, we already have the number of ways when you have exactly 1 e, right? तो हमारे पास 2 केसेस और हैं when we have 2 e's और 3 e's। उन तीनों की आप निकाल लोगे नंबर ऑफ केसेस, उन सबको ऐड कर दोगे फिर, राइट? तो 0 और 1 e वाला उसने पहले से हमसे निकलवा लिया है पहले 2 पार्ट्स के अंदर। सो नाउ वी कैन सी से कि अच्छा व्हाट हैपेंस इफ 2 e's selected, if 2 e's are already selected, इसमें क्या होएगा? इसमें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे फिर? बाकी आपके पास कितने लेटर्स रह गए? 7 रह बाकी गए कितने सर। लेटर्स रह गए? 7 नहीं रह गए ना, एक आपने सिर्फ 2 ई सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3। 6 रह 2 गए सर। ईज आपने सेलेक्ट कर लिए, देयर आर 6 लेटर्स लेफ्ट। 6 में से कितने चूज करने हैं? 4 और 3 4, हाँ। सॉरी नॉट 6 में से 2 चूज करने हैं ना, 2 सेलेक्ट कर लिए आपने ऑलरेडी। 2 ईज आपने सेलेक्ट कर लिए, टोटल कितने लेटर्स चूज करने थे? 4। तो 2 तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, कितने बाकी रह गए? 2। तो बाकी 6 में से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं। What's that? That 62 is 15, right? 2 e's पे आपके पास ये आ गए। Then the third case is, the fourth case is you've got 3 e's। अब 3 e's आपने सेलेक्ट कर लिए, e's के अलावा बाकी कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स। उन बाकी 6 में से आपको कितने चूज करने हैं? आपको 1 चूज करना 1 है। So how? So that's 6। ये सारे नंबर ऑफ वेज आ गए आपके पास, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, इन सारे केसेस को ऐड कर दिया। नो ई वाला केस क्या था? दैट वाज 15। 1 ई is 20, 2 e's is 15 again, 3 e's is 6, इन सबको ऐड कर लेंगे, you get 56 from this। That's the total number of ways that you have for selecting 4 letters out of these 9 letters। Out of a class of 8 boys and 4 girls, a group of 7 people is chosen at random। So total कितने लोग हैं? 12। Out of them you have to choose 7। Find the probability of the group of 7 includes one particular boy। So एक boy को include करना जरूरी है, right? उसमें कोई choice नहीं है आपके पास। That person is already included, okay? So what are the remaining number of cases now? अब बाकी 11 रह गए आपके पास। 11 में से कितने choose करने हैं? 6। So this is just going to be 11C6। डिवाइड इसमें क्या करना है? वो प्रोबेबिलिटी के लिए करेंगे। नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने आ गए? नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 11C6 क्या होएगा?
Sorry, 462. This is the number of ways that satisfy this condition. Okay, number of ways. In this case, total number of ways क्या होंगे आपके पास? 12 में से 7 चूज करने हैं. 12C7. 792. Probability is going to be 462 over 792. You'll just evaluate this. 7 over 12. That's your probability. That's okay. मसला नहीं है. ये clear है? Number of cases that satisfy the condition, number of total possible cases, उन दोनों को divide कर दिया, you get the probability. तो marks भी 3 के आसपास 0 मिल जाएंगे. 3 के आसपास. Okay. Find the probability that the group of 7 includes at least 2 girls. The group of 7 includes at least 2 girls. Group of 7 includes at least 2 girls. Okay. अब इसके दो तरीके हो सकते हैं. आप ये कर लें कि आप टोटल निकाल लें, उसमें से 1 गर्ल वाला केस माइनस कर दें और 9 गर्ल वाला केस माइनस कर दें, if they are possible. या 1 गर्ल वाला केस माइनस कर दें और 9 गर्ल वाला केस माइनस कर दें. That's one possibility. और दूसरा क्या है, आप 2 वाला कंसिडर कर लें, 3 वाला कंसिडर कर लें, 4 वाला कंसिडर कर लें. You can do it either way. Okay. So you have boys and you've got girls. Boys कितने थे total? 8. Girls were 4. अब क्या क्या केसेस बनते हैं that satisfy the condition? 7 आपने चूज करने हैं. You have 2 girls, 3 girls, 4 girls. Boys will be 5, 4, 3. कितने केसेस बन गए? 8C5 into 4C2, 8C4 into 4C3, 8C3 into 4C4. Is that okay? इसमें देखिए सिर्फ चूज कर रहे हैं हम. We are choosing people. इसमें arrangement matter नहीं करती है. कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें, that doesn't matter. So it's not permutations, it's combination. We just add all of these cases. तो total कर लें क्या आता है? नहीं, अभी नहीं बताया. 670, 672. बेटा कॉपी सही तरह करते जब करते हैं ना. और पिछले 672 गलत पेज देख रहे थे ना, वही तो हम कह रहा था. 672. This is the number of cases that you have that satisfy the condition. Okay. What's the total number of cases now? वो तो पहले भी निकाले थे हमने. Total number of cases, that is 792. You just divide them. आपके पास probability आ जाएगी. 672 over 792. What's that? 28 over 33. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और decimals में भी लिख सकते हो. That's fine. If you write in decimals, you should write at least 3 significant figures. At least 3 significant figures. No? Okay. Let's move on. Find the number of ways all 10 letters of the word Copenhagen can be arranged so that the vowels are together and the consonants are together. कितने vowels हैं? O, E, A, and E. There are 4 vowels. Okay. Okay. So vowels have to be together, consonants have to be together. इसका मतलब क्या है? We have only 2 boxes. एक के अंदर चारों vowels आ रहे होंगे, O, E and A. और दूसरे के अंदर सारे consonants आ रहे होंगे, which are C, P, N, H, G, N. Okay. अब outer boxes की कितनी arrangements है? 2 factorial. इन outer boxes के arrangements हैं
सॉरी, ये दैट्स फाइन, ओके, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये जो वॉल्स हैं उनके कितने अरेंजमेंट्स हैं? 4 factorial divided by 2 factorial because we've got some repetition. ठीक है, repetition e repeat हो रहे हैं, so we divide by 2 factorial. And then what about this? 6 factorial total base. Repetitions क्या है? n over 2 factorial. ये आप total evaluate कर लेंगे. This is the number of ways that we have. What do we get? 8640. That's what you get here. Okay. Any problem with this? The e's are not next to each other. Can I please have silence? Ahmad? एक ही बात है, टोटल में से टुगेदर वाला माइनस कर दे. द ईज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. आप क्या करेंगे? ईज को इकट्ठा कर देंगे. ओके, सो ईज डू नॉट हैव टू बी टुगेदर. हम क्या करें? ईज को इकट्ठा कर दें पहले. पुट द टू ईज टुगेदर. बाकी कितने बॉक्सेस रह गए? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल इसके अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? आउटर बॉक्सेस की 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. किस वजह से? दो यहाँ पे n आ रहे हैं. व्हाट अबाउट ईज? आइडेंटिकल है, उनकी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है. ईज के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत. यस, दैट्स ओके. तो कल लग गया तो सही है कि मार्क्स नहीं कटेंगे इसके. ओके, सो व्हाट डू यू गेट फॉर दिस? So this is with ease together. ठीक है. Number of ways with ease not together. Number of ways with ease not together. ये टोटल वेज है, इसमें से ये माइनस कर दे. ये क्या रिजल्ट आते हैं? 725 760. That's what you get. Okay. Okay. So village hall has seats for 40 people, consisting of 8 rows with 5 seats in each row. Okay. So these 5 people are the first to arrive in the village hall, and no seats are taken before they arrive. How many possible arrangements are there for their seating these 5 people, assuming there are no restrictions? So if there are no restrictions, 40 आपके पास places हैं, और उसमें 5 लोगों को arrange करना है. So that's simply going to be 40 P5. ठीक है, आपने इसको as it is नहीं छोड़ना, आपने इसको evaluate करना है, right? So a lot of times इसको evaluate करने का भी एक mark होता है. फिर 40 P5 लिख के आपने यहाँ पे क्या करना है? अब इसको लिखता है, ठीक है? 789 609 60. So that's what you get in the first part, right? That was fairly straightforward, 2 marks. So now it says, how many possible arrangements are there of seating Mary, Ahmed, Wayne, Elsie, and John if Mary and Ahmed sit together in the front row and the other 3 sit together in one of the other rows? Okay. Now this is important. They are sitting together. 8 rows हैं,
यहाँ पे कहाँ से एक रफ सा सोच रहे थे। हर रो में कितनी आपके पास सीट्स हैं? 5, 3, 4, then 5. You got 8 such rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You got 8 such rows. ये आपके पास इस तरह से। Okay. Now, how many ways are there for Mary and Ahmed to sit together in the front row? इनके कितने ways होंगे? So together हैं तो इनका एक बॉक्स बन गया और बाकी जो हैं आपकी स्पेसेस कहीं भी आ सकती हैं, तो दे कैन बी एनीवेयर। ठीक है, तो टुगेदर आपके पास कौन कौन से? मैरी एंड अहमद, वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है? टोटल क्या हो जाएगा? 4 factorial, right? And then 2 arrangements for MA and a 2 factorial. Is that it? Are we missing something? हाँ, ये तीनों आइडेंटिकल नहीं। आपके जो स्पेसेस हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं है ना ऐसा। स्पेसेस को आपके खाली स्पेसेस है ना, तो वो आइडेंटिकल होंगे ना। अब ये फर्स्ट स्पेस इधर है, सेकंड स्पेस इधर है, या सेकंड स्पेस पहले है, फर्स्ट स्पेस बाद में, इट डजंट रियली मैटर, राइट? तो क्या करेंगे? ये 4 फैक्टोरियल जो हमने यहाँ पे किया था और 2 फैक्टोरियल, इसका पूरे को क्या कर देंगे? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर कि बाकी जो है या अब देखते हैं बाकी रूल्स। अब क्या करना है उसने, और दूसरा क्या कहा है? द अदर 3 सेट टुगेदर इन वन ऑफ द अदर रोज। किसी एक रो में दे सेट टुगेदर। कलेक्टिवली 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों करेंगे वो? तो हम क्या करेंगे? एक तो हम इकट्ठा नहीं कंसिडर कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा बाकी कितनी 35 सीट्स हैं तो एक ही रो में आएंगे, तो हर रो को अलग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं, we've got 7 remaining rows. इन 7 में से किसी एक रो में बैठना है उन्होंने। 7 में से किसी एक रो में बैठना है। So one way to do that is we've got 7 possibilities for this, right? Or to be more precise, 7 में से हमने एक रो चूज करनी है, right? That's 7 actually. मतलब इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है, 7 में से कोई एक रो चूज कर ली जिसमें उन्होंने जाके बैठना है। Is that okay? We can just write it as 7 as well. That's fine. ये आपके पास 7 आ गए। ठीक है, एक रो उन्होंने चूज कर ली। अब जब एक रो चूज कर ली तो उसके बाद क्या होगा? 3 of them are sitting together. अब वो 3 इकट्ठे बैठ रहे हैं। अब क्या होएगा? उनके नाम क्या है? वेन, एल्सी एंड जॉन। ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं। We've got 2 spaces left. Total of boxes कितने हैं? 3 boxes. 3 factorial for the 3 boxes. W E J जो अंदर वाला है, इसको अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 3 factorial. But then the blank spaces are repeated. We divide by 2 factorial for that. And then we multiply these two. क्या आता है? 1008. Right? So that's what you get. Okay. So a group of 8 friends travels to the airport in 2 taxis, P and Q. Each taxi can take 4 passengers. The 8 friends divide themselves into 2 groups of 4, one group for taxi P and the other group for taxi Q, with John and Sarah traveling on the same taxi. Find the number of different ways in which this can be done. Okay. पहले तो 8 friends divide करना है 2 different taxis के अंदर। अभी उनकी arrangements की बात नहीं हो रही है, right? 4 जो है वो एक में चले जाएंगे, 4 दूसरे में चले जाएंगे। So how do we think about it?
taxi 1. Okay. John and Sarah, they have to be in the same taxi. Sorry? अच्छा चल let's say taxi 1 की बात हो रही है, ठीक है? अब जॉन एंड सारा एक केस ये है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, हमने प्लेस कर दिया. बाकी दोनों कितने रह गए? बाकी 6 में से आपने 2 चूज करना है. So you got 6C2 possibilities for the remaining, right? बाकी कितने रह गए? 4C4. वो तो एक ही तरीका है, तो बाकी आपके रह जाएंगे 4C4. So you've got this here. Is that it? Is that the only? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? ओके, ये भी हो सकता है कि ये जॉन सारा जो है ये टैक्सी 2 में बैठे 1 की बजाय, राइट? और फिर उसके 6C2 हो जाए और फर्स्ट टैक्सी के 4C4 हो जाए. So we can either consider that case separately. इसमें आप ऐड कर सकते हैं या अच्छा पहले उसमें बिठा दिया और फिर आपने फर्स्ट में बिठा दिया, या फिर आप उनको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. So what do you get from this? 6C2 क्या होता है? 6C2 is 10 or 15? 30. 6C2 15 होता है. Okay, so 15 and plus 15, that's going to be 30. So that's your first part. Okay. अच्छा, second part में क्या है? You got given that each taxi can take 1 passenger in the front and 3 passengers in the back. So, अच्छा ठीक है, बस तरह से. So this is the front seat and these are the back seats. Mark sits in the front of taxi B. तो उसने कहाँ पे दिया हुआ था? First part के अंदर. Okay. In the front and 3 passengers in the back. Mark sits in the front of taxi B. Okay, यहाँ पे Mark तो यहाँ पे बैठ गया. And John and Sarah sit in the back of taxi B next to each other. So John and Sarah have to be next to each other. इकट्ठे होने चाहिए. Find the number of different seating arrangements that are now possible for the 8 friends. Right? Taxi Q के कितने arrangements हैं? वो तो 4 factorial है. They're pretty straightforward. Taxi Q के 4 factorial में यहाँ पे तो कोई भी limits, कोई भी आपकी conditions नहीं, कोई restrictions नहीं है, तो आप जो मर्जी कर सकते हो. First taxi में Mark को fix कर दिया, उसको तो कुछ भी नहीं करेंगे. John and Sarah are supposed to be together. So you've got 2 boxes. एक के अंदर वो तीसरा बंदा है, उसका जो भी नाम है, let's call that X. और दूसरे के अंदर you got P, J and S. Right? So how many ways do we have for this? Yes, so that's also a good point actually. So इसमें आपकी X की कितनी possibilities हैं? बाकी आपके पास ये 3 तो आपने फिक्स कर दिया टैक्सी बी के अंदर, राइट? अब बाकी कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. अब ये X इसमें चूज करने के आपके कितने पॉसिबिलिटीज हैं? बाकी 5 में से एक बंदा यहाँ पर आ सकता है. सो दिस इज फॉर X. तो एक बंदा आपके पास यहाँ पर आ गया. जब वो इस टैक्सी के अंदर आ गया, दूसरे के लिए तो कितने होंगे? वो तो 4C4 है, तो वहां पर डजंट मैटर. बाकी वो 4 रह जाएंगे, वो तो वहां पे हमने अरेंज भी कर दिया उसको 4 पिक्टोरियल वेज में. जब X यहाँ पे हमने चूज कर लिया, ये बंदा यहाँ पर आ गया, इसके बाद इसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 2 factorial for the outer boxes, and then for JS, it's 2 factorial again. JS भी तो अपनी सीट्स इंटरचेंज कर सकता है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? वो जो हमने चूज किया था ऊपर, that was 5C1. So now we multiply this and we multiply this. इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. What do you get? 4 into 5, that's 20. 20 into 24, that is 480. Okay.
question number 6. This is May June 2021, paper 5, variant 3. Uska question number 6 hai. Let's have a look at this first. Okay. Now it says how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement. Now it's pretty straightforward. It's a standard question hai. There are 11 letters in total. Unka 11 factorial ho jayega. But then you have to look at the repetitions. You've got R, and yeah, so we've got 2 R's there. So that's going to be 2 factorial. Then we've got E's, E, and then another E, and then another E. We've got 3 E's. So we have 3 factorial because of that. And then Q is only coming once, U is only coming once, I, M, and T. Yeah, so the other letters are not repeated. You just evaluate this. 11 factorial over 2 factorial and 3 factorial. We can't leave it like this. अगर इस तरह छोड़ देंगे सिर्फ 1 mark मिलेगा. Answer लिखने का यहाँ पे mark होता है. 11 factorial divided by 2 factorial and 3 factorial. That's going to give me 3, 3, 2, 6, 4, 0, 0. That's our final result. Okay, that's 3.3 million something. Yeah, हमारे पास आ गया. ठीक है, 3326400. Okay, part B. How many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which the 2 R's are together and the 3 E's are together? Okay, so we want the 2 R's together and the 3 E's together. So जो numbers repeat हो रहे हैं, we want those 2 letters repeat हो रहे हैं, उन letters को हमें इकट्ठे रखना. ठीक है, let's do that. We want the 2 R's together. So we make 1 box for that. ये आपके पास 2 R's आ गए. We have 2 R's together. The 3 E's also need to be together. So we have 1 box for that. 1 box for the E's. Now, how many letters are we left with? We're left with 6 letters, right? So on 6 letters, can we like boxes बना देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we look at how many outer boxes do we have? We've got 8 boxes, 8 outer boxes. अब इनमें कोई repetition हो रही है? Repetition तो सिर्फ इन्हीं letters में थी, उनको तो आपने इकट्ठे कर दिया already. बाकी letters तो सारे different हैं. बाकी letters कौन से हमारे पास रह गए? We've got Q, U, I, M, N, and T. All the other letters are different. तो उनमें कोई repetition नहीं है, तो ये सारे boxes different है. हमें किसी से divide नहीं करना. And then we look at the arrangements of these letters that are inside. E's की arrangement, they're identical. We don't have to arrange them. R's are identical. Again, we don't have to arrange them. अगर आप करते भी तो R की क्या होती? It would have been 2 factorial over 2 factorial. E's की क्या हो जाती? 3 factorial over 3 factorial. And you're left with 8 factorial. ठीक है, वही आपके पास रहेगा. And now you can evaluate this. 8 factorial को evaluate कर लें. या देख लें क्या आता है. This turns out to be 40320. ठीक है, that's what we get from part B here. Okay, let's move on. Now it says how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which there are exactly 3 letters between the 2 R's. So we want exactly 3 letters between the 2 R's. Now, how do we think about this? So one way to think about this is we say, since we want 3 letters between the 2 R's, we can club these 5 letters together. इनका एक single box बना देते हैं. And that box may look something like this. We've got an R here, and we've got an R here. अच्छा, इसको किसी तरह से थोड़ा सा different बनाना था. I say this is R, and this is R, but this is one single box. I'm representing this dotted. And there are 3 letters in between these 2 R's. इनके दरम्यान में exactly 3 letters आएंगे. अब ये box इकट्ठा move करेगा, right? ये box इकट्ठा move करेगा. Okay. Now, how many other spaces do we have? We've got 1, 5 हमने यहाँ पे represent कर ली. कितने बाकी रह गए? 6 letters रह गए. So we can have 6 other boxes. I'm going to draw them here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we think about how we can arrange all of this. Sorry about that. Okay. Ab outer boxes हमारे पास कितने? Let's count them. There are 6 these and then 1 that's big box. There are 7 outer boxes that we've got there. ठीक है?
7 आउटर बॉक्सेस, उनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? 7 फैक्टोरियल। लेकिन are there any boxes here that are identical? R's तो ठीक है यहाँ पर आ गए हैं, R's तो ठीक है यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन बाकी हमारे पास क्या रह गया? We still have E's left. तो यहाँ पे E's कहीं पर आ रहे होंगे, ठीक है, तो हमने उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3 फैक्टोरियल। That's what we got to do here, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। अब फिर हमें देखना है कि इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास अंदर वाले बॉक्सेस आए हैं, इनको कैसे फिल करें? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपके पास टोटल 11 लेटर्स थे, उनमें से 2 आर्स तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिए, बट यू डोंट नो व्हाट अदर 3 लेटर्स आर गोइंग टू बी हियर। यहाँ पे बाकी 3 लेटर्स कौन से होंगे, तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि उन 9 में से हम कौन से लेटर्स यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। इसका क्या तरीका होएगा? we've got 9 टोटल लेटर्स, उनमें से 3 को यहाँ पे अरेंज करना है। इसके जो केसेस हमारे पास बन रहे होंगे, लेट मी एक्चुअली कीप दिस ऑन अ साइड हियर, जो यहाँ पे 3 लेटर्स प्लेस करने के हमारे पास केसेस बनेंगे, आउट ऑफ दोस 9 लेटर्स we have to arrange 3 letters. This is going to be 9p3, 9p3। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल 9 लेटर्स जो बाकी रह गए थे, उनमें से 3 को यहाँ पे अरेंज कर देंगे, and that's going to give us 9p3 multiplied by this। अब you might be thinking कि अच्छा उसमें तो e's भी आ सकते हैं। e's जो आ सकते हैं हमारे पास, e जहां पे भी आ जाएगा, लेट्स से एक ही यहाँ पर आ गया, एक ही यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, इनकी जो रेपिटेशंस हैं वो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा आएगा, तो वो उससे हैंडल हो जाएगी यहाँ, ठीक है। सो यू मल्टीप्लाई दिस, यू मल्टीप्लाई 9p3 into 7 factorial and then divide by 3 factorial, and that's going to give you your final result, okay। R's को अरेंज करने का यहाँ पे की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ही हो जाएगा अगर आप इसको अरेंज करने की कोशिश पे करते हो। So this is what we get. This is one way to do it, right? This is one way to do it. There are many other possibilities. आप और तरह भी देख सकते हैं. But let me know if there are any confusions on this, because this is slightly tricky. If there are any problems in this, let me know. एक तरीका इसको ये सोचने का, एक और तरीका ये हो सकता है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह कर लें. Just show that to you as well. Let's say, yeah, we can actually do it below here. इसको इवेल्युएट कर लें. ये मेरे पास क्या आता है आंसर इसका? 42336 Okay, that's what you should be getting from this. Now let's try another method. एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से प्लेस कर दें. We've got R here and then we've got R here. ये दोनों हमने फिक्स कर दिया. And then what we're saying is there are 3 spaces in between, and how many spaces are we left with? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? It's very similar to what we've done before actually. अब हम इस तरह से सोच लें कि ये बॉक्स जो हमने ये वाला बॉक्स बनाया जिसके अंदर 5 लेटर्स आ रहे हैं, ये कितने प्लेसेस पे आ सकता है? इट कैन आइदर स्टे हियर, या तो यहाँ पे रह सकता है, या ये एक स्टेप राइट में मूव कर सकता है, इधर आ सकता है. दैट्स द सेकंड पॉसिबिलिटी कि ये ब्लैंक लेफ्ट पे आ जाए और बॉक्स जो है उसके दरमियान में आ जाए. दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट. एक ये हो सकता है कि ये पूरा बॉक्स इधर आ जाए और फिर राइट साइड पे आपको कितने लेटर्स बच जाए? 5 लेटर्स राइट साइड पे. एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 लेफ्ट पर आ जाए और ये बॉक्स यहाँ पे दरमियान में आए और फिर आपके पास 1, 2, 3, 4 लेटर्स राइट पे आ जाए, एंड सो ऑन. हाउ मेनी सच केसेस डू वी हैव? एक तो ओरिजिनल पोजीशन पे अभी है, या यहाँ पर आ सकता था. 2 केसेस, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 such possibilities. There are 7 such possibilities. Okay, there are 7 such possibilities. Now,
we've got 7 possibilities for that. We can say this is 7 cases ये हो गए बॉक्स के मूव करने के. अब बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी हमने 9 लेटर्स को अरेंज करना है. सिर्फ 9 लेटर्स को अरेंज करना है किन स्पेसेस के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन 9 स्पेसेस में बाकी 9 लेटर्स को अरेंज करना है. वो क्या हो जाएगा? सिंपली 9 लेटर्स हैं टोटल, राइट? उसका हो जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल. And then, since there are 3 E's amongst those 9 letters, we have to divide by 3 factorial because of that, right? And that should give you the same result, right? So you can try this 7 into 9 factorial divided by 3 factorial. And that also gives me 42360. That's another way to think about this. Okay, फरजान 9p3 बेसिकली यहां से आ रहा है. हमने ये बॉक्स तो फिक्स कर दिया ना कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास 5 लेटर्स होने चाहिए. एग्जैक्ट इस बॉक्स के अंदर 5 लेटर्स होने चाहिए. बट वी डोंट नो what other 3 letters are going to be apart from the 2 R's. R के अलावा जो बाकी 3 लेटर्स हैं उनका हमें नहीं पता. अब उसमें तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन 3 ये जो 3 लेटर्स हैं यहाँ पे they are M, E and T. That's one possibility. Another possibility could be that these letters are, I don't know, N and then Q and N, Q and T. This could be another possibility. Now there are many such cases like this. How many cases are there like this? 9p3 because हमने उनको 9 letters को arrange करना है in 3 places के अंदर. That's going to be 9p3. ठीक है. और you could also do 9p3 की जगह ये भी कर सकते थे 9 में से आप 3 letters choose कर लो 9c3 and then you arrange those 3 letters. That would be 9c3 into 3 factorial. That's basically the same thing as 9p3. They are equivalent. तो दोनों तरह से सोच सकते हैं. या तो 9c3 9 में से 3 लेटर्स चूज करो उनको अरेंज कर दो वहां पे, या फिर आप डायरेक्टली 9 में से 3 लेटर्स को अरेंज कर दो लाइक दैट. ठीक है. जो ईज हैं आपके पास, जो ईज रिपीट हो रहे हैं, वो आपका ये 3 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हैंडल कर रहा है वहां पे, राइट? तो वहां पे हैंडल हो चुका है. I hope that makes sense now. Okay, so these are 2 ways of thinking about this. Again, it's slightly tricky, but you'll see some other questions in the recent past papers like this as well. Do have a look at them as well. इसी तरह के 2 letters के दरमियान में इतने letters होने चाहिए. You will have the same method for them as well. Okay, let's move on now. Part B of this. Now it says 5 of the 11 letters in the word requirement are selected. 5 of the 11 letters in the word requirement are selected. How many possible selections contain at least 2 E's and at least 1 R? At least 2 E's and at least 1 R. अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का एक थोड़ा सा आसान तरीका ये होता है कि जो आपको मिनिमम नंबर चाहिए उनको तो आप कहो कि ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. एटलीस्ट 2 ईज चाहिए ना, तो 5 में से यू नो फॉर श्योर कि 2 ईज तो आएंगे ही वहां पे, राइट? यू आर श्योर अबाउट दैट. एंड यू नीड एटलीस्ट 1 आर. दैट मींस एक आर भी आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है. ठीक है. 5 में से ये 3 लेटर्स तो दे आर श्योर शॉर्ट, ये तो आने ही आने, राइट? इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है. What other letters are we left with? We're left with, let's write them down. Write them down. We're left with R, Q. अच्छा, E एक select हो गया, दूसरा भी select हो गया. We still have 1 E left. एक E हम यहाँ पे अभी भी लिख लेते हैं. इसको end पे लिख लेते हैं. पहले non-repeated letters लिख लें. R, Q, U, and then we have I. Non-repeated लिख रहा हूँ मैं पहले. Q, U, I. And then I have M. And N and T. अच्छा, ये तो वो लेटर्स हैं 6 लेटर्स जो रिपीट नहीं हुए. अब देखें, there were 2 R's, 1 R here and another R here. एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया,
एक आर को वहां से रिमूव कर दो, ये अच्छा तरीका है। आप यहाँ से एक काट दो, एक आर खत चला गया, एक और एक ई भी चला गया, एक ई भी चला गया। वी स्टिल हैव वन आर लेफ्ट एंड वन ई लेफ्ट, वो भी यहाँ पे लिख लेता है, वन आर एंड वन ई। ये आपके पास लेटर्स रह गए, ये आपके पास लेटर्स रह गए। अब आप क्या कर सकते हो, there's actually a direct way of doing this now. A direct way of doing this now. Why? Because now the remaining letters are all the same. Are all different. They're not the same. They're all different. सारे different हैं, इनमें कोई भी repetition नहीं है। जब repetition नहीं होती हमें cases बनाने की जरूरत ही नहीं है। इन 8 में से हमें कितने letters select करने हैं? हमें 8 में से 2 letters और select करने हैं इन 2 places के लिए। The quickest way to do this would be you just say it's 8C2 because of this reason, because बाकी letters में से कोई भी repetition नहीं है, ये directly क्या हो जाएगा, it's going to be 8C2 and that's going to give you 28, just a one-liner, and that gets you 4 marks, just a one-liner. ठीक है, this is one way to do it. This is one way to do it कि आपने जो select कर लिए हैं वो तो already हो गए हैं, ठीक है, बाकी letters में आप select कर लें। Yes, that's correct, Iman. If it had said कि exactly 2 E's चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 E's तो already select हो चुके, थर्ड E को आप कंसिडर नहीं करोगे बाकी सिलेक्शन के लिए, you'll remove it from there. ये आप यहाँ से खत्म कर दो कि आप कहोगे टोटल 7 लेटर्स रह गए, बाकी 7 लेटर्स में से आपने सेलेक्ट करने। अगर उसने कहा होता कि exactly 2 E's चाहिए, फिर आप कहोगे 2 E's सेलेक्ट हो गए, बाकी आपके पास रिमेनिंग जो रह गया उसको आप देख रहे हैं। ऑलराइट, so this is one way to do it. This is the quickest way of doing it in this particular case, because जो बाकी letters रह गए हैं उसमें कुछ भी repeated नहीं है, तो आप directly इस तरह से कर सकते हो 8C2. Another way to do this is जो आप लोग में से अक्सर करते हैं, and that's also fine, that takes slightly more time, and that's going to be that you make different cases for the repeated letters. जो repeat हो रहे होते हैं letters उनके cases बना ले, right? जो repeat हो रहे होते हैं उनके cases बना ले। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपको ये तो पता है 2 E's तो आने ही है और एक R भी आना ही है, ठीक है। फिर आप क्या कहें कि अच्छा अगर मेरे पास बाकी 2 लेटर्स E और R के अलावा कुछ और आ रहे हो, E और R के अलावा कुछ और आ रहे हो, वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितने बाकी लेटर्स हैं मेरे पास E और R के अलावा? I've got 6 other letters. I'm going to write them here. QUIMNT. तो बाकी 2 लेटर्स जो हैं E और R के अलावा कुछ है, यहाँ पे E और R के अलावा कुछ मेरे पास लेटर्स आ रहे हैं, उनकी कितने पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती हैं? आउट ऑफ दीज 6 लेटर्स I've got to select 2, so that's 6C2, ठीक है। एक मेरे पास ये केस हो गया कि 2 E's आ रहे हैं और 1 R आ रहा है। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है, that I have 3 E's and 1 R. This is also one possibility, because ये आपकी कंडीशन को satisfy करता है कि 3 E's हो जाए आपके पास और एक R हो जाए। Now I've got 1 remaining letter to select. उसके कितने cases हो जाएंगे? That's just going to be 6C1. बाकी 6 letters में आपने सिर्फ एक select करना, ठीक है। This is another case. First case, second case. एक और case क्या हो सकता है, आपके पास ER तो आ रहा था पहले, अब आप क्या कहें, E भी एक और select कर लें और R भी एक और select कर लें। अब ये तो आपने सारी सिलेक्शन ऑलरेडी कर ली, what are we left with? We don't have to select anything else. बाकी 6 में से तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, so this is one possible case, right? You can say बाकी 6 में से you don't have to select anything. Okay, this is another possibility. और क्या हो सकता है, you could have 2 E's like before and 2 R's. This is another possibility. और जो 6th letter है फिर वो 5th letter है वो कुछ और हो जाए, so that's going to be 6C1 as well. बाकी 6 में से कोई भी एक select कर लें। 6C2 evaluate कर लें, I think it's 15, 6C1 is 6, 6C01 होता है, 6C1 is also 6. You add all of them up and that gives you 28 as well. So that's another way to think about this. ठीक है? So this is what we have.
Now, this is a question that I've been asked so many times in the past few weeks, because there really isn't. So I was just before the session, I was looking at all the previous papers. मैं सारे देख रहा था letters वाले questions, and this is basically the only question like this in the papers, in the past papers. इसके last part में there is a slight issue in the sense it's different from what we've been doing before. तो इसमें थोड़ी सी एक नया जो है वो आइडिया में यूज करना है. Selection instead of selections. Iman, I don't understand your question. Where it says selection instead of selections, what does that mean? अच्छा, let's do this and then we will come back to that. ठीक है, एक दफा ये कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं. Okay, so this is question number 6 from paper 5.3 now. Paper 5.2. Find the total number of different arrangements of the 8 letters in the word tomorrow. You start में उसने आपको आसान मार्क्स दे दिए, ले लो अभी मार्क्स आसान, बाद में आपसे वो कवर अप कर लेगा. Tomorrow, that's 8 marks, that's 8 letters, right? So that's just 8 factorial divided by how many repetitions do we have? O and O, so that's 3 factorial. And then we have R and R, that's 2 factorial. ये आपके पास ये आ जाएगा पहले. ठीक है, that's the first part. Let's evaluate this. ये देख लें क्या आता है आपके पास. 8 factorial over 3 factorial and 2 factorial. What do we get in this case? So this is 3360. 3360, that's the first part. Okay. Now the second part says find the total number of different arrangements of the 8 letters of the word tomorrow that have an R at the beginning and an R at the end, and in which the 3 O's are not all together. Okay, so they are not all together. सारे साथ नहीं हो सकते, 2 साथ हो सकते हैं, that's allowed. तीनों साथ नहीं हो सकते. Okay, so it's very important to understand the statement correctly. Okay, now there are 8 letters in total, so we've got 1 R at the beginning, 1 R at the end, and it looks something like this. ठीक है. How many letters do we have in the middle? We have 6 letters in the middle. अब दरमियान में क्या हो सकता है? हमारे पास बाकी लेटर्स कौन से रह गए हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं. T-O-M-O-O-W. These are the letters that we're left with in the middle. Now, what we want is we want 3 O's not all together. अच्छा देखें, ये साइड वाले R's तो फिक्स हो गए ना, अब उनके तो कोई काम ही नहीं अरेंजमेंट के अंदर, उनको आप भूल जाएंगे ना. दरमियान वाले 6 लेटर्स से हम डील कर रहे हैं. सर R's तो आपने फिक्स कर दिए हैं, उनको कुछ भी नहीं करना आपने. ठीक है. Now, since you want O's to be not together, आप क्या करें, उनके टुगेदर वाले केसेस फाइंड कर लें, टोटल में से माइनस कर दें. टुगेदर वाले केस फाइंड कर लें, उनको टोटल में से माइनस कर दें. नाउ व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो फिगर आउट कर लें. टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, हाउ मेनी आर दे गोइंग टू बी? R's तो फिक्स्ड है ना, दरमियान में 6 लेटर्स के कितने अरेंजमेंट्स होंगी? 6 फैक्टोरियल. बट देन वी गॉट 3 O's देयर. O आपके रिपीट हो रहे हैं, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए. इसको एवेल्युएट कर लें, देख लें पास क्या आता है. अब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स विद ओज टुगेदर. ओज को हम अगर इकट्ठा कर दें, उसमें क्या आएगा? अच्छा, now what do we do in this case? Again, R's तो फिक्स्ड है, उनको आप भूल जाए बेशक. दरमियान में क्या हो रहा है, 3 O's एक बॉक्स में आ गए, और बाकी कितने बॉक्सेस रह गए आपके पास? You left with 3 other boxes. How many arrangements do we have for this? Outer boxes आपके पास कितने हैं? 4. उनकी अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? उनकी अरेंजमेंट्स आपके पास हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल. बॉक्स के अंदर यहाँ पे O's की अरेंजमेंट्स, that's we don't have to do anything there, सारे आइडेंटिकल हैं, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so that's just 4 फैक्टोरियल.
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, फिर से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहाँ पे ओज टुगेदर नहीं है, that's going to be total, that's 6 factorial over 3 factorial minus when the case when they are together, and that's going to give us the final result. ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आता है. 6 factorial is 720 divided by 6 minus 24, and that turns out to be 96. This is 96, ये हमें चाहिए था इस part के अंदर. ठीक है, that's part B. Now let's look at part C of this. Part C of this. It says 4 letters are selected at random from the 8 letters of the word tomorrow. Okay, so it's very similar to what we did in the very last question. दूसरे paper के अंदर कुछ letters select किए out of a bunch of letters. There are 8 letters in total. Find the probability. So now we're looking at probability. We're not talking about number of possible selections. We're talking about probability. Find the probability that the selection contains at least one O and at least one R. At least one O and at least one R. Now, how do we think about this? हम क्या करते थे इस तरह के केसेस के अंदर? Let me do it that way. जिसको हम पहले करते आए हैं कि number of cases find कर लें. Number of cases find कर लें that satisfy the condition and then divide that by the total number of cases. ठीक है? अगर हम वो करते तो उसमें क्या करते हैं, हम वो सारे केसेस बना लेते पहले कि आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने केसेस बनते हैं. ठीक है, सो यू कुड मेक केसेस लाइक दिस. लेट मी जस्ट राइट देम डाउन. एटलीस्ट वन ओ होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वी गॉट वन ओ. एटलीस्ट वन आर, सो वी हैव वन आर फॉर दैट एज वेल. वी गॉट एटलीस्ट वन आर. अब बाकी 2 लेटर्स हमने देखने हैं कि वो क्या होंगे. ठीक है, अच्छा, अब टुमारो में से अगर आप एक ओ खत्म कर दें और एक आर खत्म कर दें, ये तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, दैट्स ऑलरेडी गिवन. यू हैड 4 लेटर्स इन टोटल, बाकी आपने 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं. अब बाकी जो 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं वो इन बाकी लेटर्स में से आएंगे. और आर के अलावा बाकी क्या क्या रहेगा हमारे पास? लेट मी जस्ट राइट देम डाउन हियर. टी एम ओ आर ओ डब्ल्यू. अब इसमें ओ रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो उसके हमें केसेस अभी भी बनाने पड़ेंगे. राइट, कि ओ के साथ आपके क्या क्या केसेस बनते हैं वो हम फिगर आउट कर लेते हैं. अच्छा, एक तो आपका केस ये हो गया कि इसका मैं कैसे लिखूं, राइट दिस वे. एक ओ है, एक आर है, एक ओ है, एक आर है. इसको इस तरह से अगर लिख लें, आई थिंक इट्स ओके. एक ओ है, एक आर है, और जो बाकी 2 हैं दे आर समथिंग एल्स. बाकी 2 हमारे पास ओ आर के अलावा कुछ और चीज. ठीक है, अच्छा, एक ये केस हो गया. इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. अच्छा नहीं, खैर, लेट मी से x represents neither o nor r. ठीक है, x से रिप्रेजेंट कर लिया, बाकी 2 मैंने x कर लिया. ठीक है, अच्छा, that's one possibility. Another possibility could be, since it says at least one o and at least one r, तो एक से ज्यादा तो हो सकते हैं. Another possibility could be o, there could be 2 o's and then 1 r, and then the fourth thing could be something else. एक ये केस हो गया हमारे पास. ठीक है, और क्या हो सकता है? एक हमारे पास ये हो सकता है कि we have 1 o and 2 r's. एक ये केस हो सकता है. ठीक है, हमारे पास r's कितने थे यहाँ पे लिख लेते हैं. we had 2 r's in total and we had 3 o's in total. तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, फोर्थ हमारे पास कुछ और हो जाए. अच्छा, और क्या हो सकता है? we could have 2 o's and 2 r's. this is another possibility कि वही चारों आ जाए. और क्या हो सकता है? ओस क्योंकि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. 2 वाले केसेस हमने सारे देख लिए. 1 1 1 2 1 1 2 and then 2 2. yeah, so now we could have 3 o's. That's also possible. O O O and then r.
ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बन गए इस केस के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करें, इनके फाइंड कर लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं। फर्स्ट में आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, कितने लेटर्स में से, ओ आर के अलावा कितने लेटर्स आपके पास रहते हैं, यू गॉट टी एम हियर एंड डब्ल्यू हियर। बाकी 3 लेटर्स में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3C2, 3 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एक लेटर सेलेक्ट करना है कितने में से, टी एम और डब्ल्यू में से, राइट। टी एम और डब्ल्यू है आपके पास सिर्फ ओ आर के अलावा, 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ये कितना हो गया, अगेन 3 में से एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना है आपको, बाकी 3 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 0 सेलेक्ट करने हैं। इसमें कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, 3 में से 0 सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी केसेस डू वी गेट फ्रॉम दिस, ये आप इवेल्युएट कर लें। 3C2 3 होता है, 3C1 3 होता है, 3C1 भी 3 होता है, 3C0 1 होता है, 3C0 1 होता है। All of this ends up giving you 11 at the end. So there are 11 possible cases that satisfy your condition. There are 11 total cases that satisfy your condition. ठीक है। Now you might think कि अच्छा ये 11 केसेस बन गए, अब मैं फाइंड कर लेता हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। वो भी एक्चुअली इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करना, बिकॉज देयर आर रेपिटेशंस देयर। टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करना फॉर द 4 लेटर्स, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। वो आप फाइंड कर लें, इसको उससे डिवाइड कर दें, बट it's even if we're able to do all of that, it's not going to give you the correct result. And now let's try to understand why that is the case. Let's try to understand why we are not going to get the correct result if we were to do this. और अब हम इसमें instead हमें क्या करना पड़ेगा? Let me give an example. Let's say we've got these letters. So let's take a simplified example. Daniel in part B, why don't we subtract? Actually, let me come back to that. In some time. Let's actually do this. I'll take your question at the end. Okay. Let's take this example A. So I've got 5 A's here. Or let's do even more to be more clear. I've got 6 A's here and I've got 2 B's here. How many total letters do I have here? I've got 8 letters in total. If somebody was to ask you to find the probability of selecting two B's, so let's do it this way. Let's say somebody was to tell you 2 of these 8 letters are selected at random. Okay, 2 of these 8 letters are selected at random. Find the probability that both of them are B. Okay, now let me repeat. There are 8 letters that we've got. These are the 8 letters that we have. They're written like this. 2 of these 8 letters are selected at random. Find the probability that both of them are B. Acha. Now, if I were to use the same method here, what is going to be the total number of cases? क्या मेरे पास cases हो सकते हैं of selecting 2 letters out of these? क्या हो सकता है? A's हो सकते हैं, A हो सकता है. That's one possibility. दोनों A's हो, right? एक case हो सकता है. Another case could be एक केस है कि दोनों A's हो. एक केस हो सकता है कि एक A हो, एक B हो. Select कर रहे हैं तो order matter नहीं करता. Another possibility is you've got BB. These are the only 3 cases that we've got. Now, if I were to use the same logic that I used here, कि मैं यहाँ पे 11 मैंने find कर लिए और 11 को उसमें divide कर देता जो भी आपका total होता, अगर मैं find कर लेता total भी. If I were to use the same logic here,
what would I get? Probability that both of them are B. What am I going to get here? There's one case out of 3 that's giving me BB. So probability, it appears, of both being B is 1/3. Look at the letters. Does that make sense? There is equal chance of getting AA and AB and BB. क्या तीनों की probability आपको equal लग रही है? Just by looking at this, what does your intuition say? AA की और BB की probability क्या equal हो सकती है? आप 2 letters यहाँ से randomly select कर रहे हो. Now, of course, the number of A's is more as compared to the number of B's. तो A की probability ज़्यादा होगी, A होने की probability बहुत ज़्यादा होगी as compared to getting BB's, right? So the problem is the cases that you have, they do not have equal probabilities. जो cases आपने बनाए हैं, इनकी probabilities equal नहीं है, क्योंकि A की probability different आने की, B की probability different आने की. So it's not, so all of those cases do not have equal probabilities. तो आप उनको same weight assign नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये cases हैं, तो there is 3 out of whatever chance of getting this, and then there is 1 out of whatever chance of getting this, because ये इस तरह के एक केस बन रहा है, इस तरह के 3 cases बन रहे हैं. You can't say that, because in सब के weights different होंगे. आपके पास number of letters जो आ रहे हैं, R 2 आ रहे हैं, O's 3 आ रहे हैं, सारे letters के आने की equal probabilities नहीं है. ठीक है? So that's why this method is not going to work here. That's the first thing to understand why our normal method does not work here. तो यहाँ पे क्या मसला क्या है? अगर आप उसने आपसे number of cases find करने के लिए क्या होता? This would be correct. You would get 11 cases and that will be it. उसने number of cases नहीं पूछा, उसने आपसे probability पूछा है. So when you have probability to find in cases like this, और आपके पास यहाँ पे letters repeat हो रहे हो, ये जब 2 चीजें हो, आपने probability find करनी है इस तरह के केस में, और letters आपके repeat हो रहे हैं, आप वो अपना standard method यहाँ पे नहीं use कर सकते. ठीक है? So this is not going to work. What do we do instead then? हमने करना क्या? ठीक है? ये हो गया कि ये हमने नहीं करना. ठीक है? तो अब करना क्या? Let's think about that. Yes, Zainab. Should I unmute you? Or can you write it down? Acha. Let me do that here. Participants. Yes, can you see the option now? Yes, sir. Something sir, मैंने पूछना है कि अगर probability. Okay, I'm sorry. Could you say that again? I'm saying that they're asking for the probability, right? So we're just going to divide the particular asked case over the total possible cases. Why are you saying कि ये valid नहीं है? Total number of cases, क्योंकि हर एक केस की equal probability नहीं है ना. इस केस की और इस केस की, ये तो 3 cases हैं जो ऊपर मैंने लिखे हैं. इन 3 cases की और इन 3 cases की probabilities equal नहीं है. Are you saying this Number because of the number of cases? Yes, exactly. There are 2 R's and there are 3 O's. So हर केस की probability different है basically. हर केस की probability different है. जो हम पहले करते थे, जो हमारे पास different cases आते थे, उनकी probability सबकी equal होती थी. तो उसमें हम इस तरह की चीज यूज कर सकते थे. तो अगर ये सारे letters different होते ना, अगर ये सारे letters different होते, then it would work. But the problem here is the letters are not different. Some letters are appearing more number of times, some letters are appearing less number of times. तो इनकी सब हर केस की probability जो है वो different होगी. Just think about this example. जो number of cases हमने ये 3 बनाए हैं, इन सब की equal probabilities नहीं है. A की probability ज्यादा है और B की probability कम है, because A ज्यादा आ रहे हैं, B कम आ रहे हैं. Okay? Okay, thank you. All right. So this is what we are not going to use. ठीक है? ये हो गया कि हमने क्या नहीं करना. अब क्या करना है? करना क्या है इसमें? Okay. Now, in order to assign correct weights to all of those letters,
what we're going to do is we're going to treat these letters like categories. ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस तरह हम वो करते थे questions like those. For example, we've got 20 people. ठीक है, उसमें से let's say there are 8 Pakistanis, there are 6 Indians, there are 6 Chinese. Okay, we've got 20 people and उसमें से 8 Pakistanis हैं, 6 Indians हैं, 6 Chinese हैं. आपने select करने हैं, let's say 5 लोग आपने select करने हैं. उसमें condition है कि अच्छा आपको you need at least one of each citizenship, right? At least one from each country. आपको ये चाहिए. तो उसमें आप किस तरह से केसेस बनाओगे? तो आपके पास क्या है, 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल है, लेकिन वो जो 20 के 20 लोग हैं वो सारे डिफरेंट लोग हैं. They are not identical, they are all different. We're going to use that idea here as well. We're going to say there are 3 categories of people that we've got. The 3 categories of letters that we've got. एक हमारे पास R है, एक हमारे पास O है, और एक हमारे पास इन दोनों में के अलावा कुछ और है, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X के साथ. X से मैंने क्या डिनोट किया है? It's neither R nor O. तो जो लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, यानी एक दफा आ रहे हैं सिर्फ TMW, राइट? TMW वो सिर्फ एक दफा आ रहे हैं, उनको आपने अलग से डिनोट कर दिया. ठीक है, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने इकट्ठे इस तरह से क्लब कर दिया. सॉरी, द अदर वे अराउंड. जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने अलग से इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट कर लिया. जो रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ एक दफा आ रहे हैं, उन सबको आपने क्लब कर लिया इन वन कैटेगरी. ये आपने 3 कैटेगरीज बना दी. ठीक है. Farzan, yes, that's correct. So if you had to find the number of cases, then that 11 would be fine. ठीक है, अगर नंबर ऑफ केसेस फाइंड करने होते उसके लिए वो सही होता. प्रोबेबिलिटी के लिए दैट मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, बिकॉज हर केस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी. अच्छा, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हम देखेंगे अगेन द आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर, बस इससे कैलकुलेशन हम डिफरेंट करेंगे. केसेस बना लेते हैं. यहाँ पे क्या बन रहे हैं हमारे पास केसेस? क्या बनेंगे? एक केस हमारे पास, ये दोनों कंडीशंस मीट करनी है ना, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 R होना चाहिए, और फिर बाकी दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अच्छा, व्हाट कैन वी हैव? वी कैन हैव 1 R टोटल कितने यहाँ पे लिख लेते हैं. देयर आर 2 R's इन टोटल. हाउ मेनी O's? देयर आर 3 O's इन टोटल. बाकी लेटर्स कितने हैं? देयर आर 3 अदर लेटर्स. ये हमारे पास बन गए. ठीक है. Now let's write down the possibilities. 1 R, 1 O, and then we could have 2 other letters. Total 4 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक possible case ये हो गया. Then we could have 1 R and 2 O's and 1 other letter. We could have 1 R and 3 O's and 0 other letter. ये 3 हमारे पास cases हो गए. Then we could have 2 R's. ये 1 R के साथ ये तीनों cases हो गए. 2 R's and then 1 O and 1 other letter. 2 R's and 2 O's and 0 other letter. Do we have any other case? इसके अलावा और कोई केस बन रहे हैं यहाँ पे? That's it, right? These are the only 5 cases that we've got. और कोई केस नहीं बन रहा. ठीक है, ये 5 cases बन गए. आपने उनको इस तरह की ट्रीट करना है कि all of these are different letters. ठीक है, ट्रीट इनको डिफरेंट लेटर्स की तरह करने. हमने इनको एक तरह से कैटेगराइज कर दिया. हम लोग कैटेगराइज कर दिया कि R कैटेगरी के 2 हैं यहाँ पे, O कैटेगरी के 3 है, X कैटेगरी के हमारे पास 3 है. ठीक है, X मींस नाइदर R nor O. अब इसको नॉर्मली जो हम कैटेगराइजेशन वाले क्वेश्चंस में करते हैं वही करेंगे. इससे फायदा क्या होएगा? वो प्रोबेबिलिटी वाला आइडिया जो है, वो प्रोबेबिलिटी सब केसेस की हमारे पास वो एडजस्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग एवरीथिंग एज डिफरेंट, राइट? R's को भी हम डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, O's को भी डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी उससे एडजस्ट हो जाएगी. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम दिस? इससे हमारे पास केसेस कितने बने? Out of 2 R's, we've got to select 1, so that's 2C1. Out of 3 O's, we've got to select 1 O's, 3C1. Out of 3 X's, we've got to select 2, so that's 3C2. Yeah, हमारे पास एक हो गया. Then you've got 2C1 into 3C2 into 3C1. We have 2C1 into 3C2
3 into 3C0, 2C2 into 3C1 into 3C1, and finally we've got 2C2 into 3C2 into 3C0. ये सारे cases evaluate कर लें, उनके आपके पास total आ जाएगा. You can see what that turns out to be. 2 into 3 into 3C2, that's 3 also. It's going to be 18, right? 2 into 3 into 3, 18 हो जाएगा. 2 into 3 into 3, that's also 18. 2 into 3C3, 3C3 1 होता है. 2 into 1 into 1, that's going to be 2. 1, 2C2 is 1, 3C1 is 3, 3 and 3, that's going to be 9. And then we have 2C2, that's 1, 1 and 3, and then 1, so that's going to be 3. ये आपके पास सारे cases आ गए. You can add all of them up. ये आपके पास क्या बन गए? 36 plus 2, that's 38. 38 plus 12, that is 50. ये आपके पास 50 cases बन गए. What's the total number of cases without any restrictions? ये at least one or at least R वाले restriction खत्म कर दें. Total cases आपके पास कितने बन रहे हैं? Again, remember, we are considering all letters as different. सारे letters को हम different consider कर रहे हैं. तो फिर हमारे total cases कितने बनेंगे? 8 letters हैं. 4 select करने हैं. That's just 8C4, right? इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारों को different consider कर रहे हैं. So that's just 8C4. 8C4 gives us 70. What's the probability then? Probability that we were looking for, that's going to be 50 over 70 or 5 over 7. That's what we get. Okay, so that's what we do in this case. कब ये करना है? जब probability आपको find करनी है और कुछ letters repeat हो रहे हैं, उनमें से आपने कुछ letters select करने हैं. You'll have to do something like this. You'll have to treat all letters as different and then do it like this. Yes, exactly. So we're treating them as different, just like you're talking about people or anything else. हम उनको identical नहीं treat करेंगे. That's the only thing that we're doing here. हम letters को identical नहीं treat करेंगे, यहाँ पे उनको different treat करेंगे. And then the rest of the process, you know. ठीक है? इससे होगा क्या? वो जो probability, क्योंकि सब cases की same नहीं थी, वो basically जो है यहाँ पे manage हो जाएगा उस तरह से. Yes. So अगर हमें number of cases find करने होते हैं, वो तो वही method होता है जो हम पहले करते हैं. वो तो आपके पास number of cases तो वही 11 ही बन रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि probability के लिए पूछ रहा है, वो probability calculate करने के लिए हमें इस तरह से उनको different treat करना पड़ेगा. Okay, I hope that makes sense to everyone. So बस ये आप अब ज़हन में रख लें. Probability की बात हो रही हो और repeated letters हो, तो आपको उनको different treat करके इस तरह से calculate करना पड़ेगा. And you understand the logic for that. क्यों? क्योंकि हर case की probability equal नहीं है. अगर हम उनको repeated ही consider करते हैं, उनकी probabilities जो है equal नहीं होती, तो हम directly नहीं कर सकते इस तरह से.